This poem is not just talking about birds, but this poem is talking about symbolically about feminine gender. This poem is talking about people who are downtrodden. This poem is talking about people who are victims. This poem is talking about minorities. So symbolically, the cage bird represent the people who do not have power in society. Symbolically, the cage bird represent the minorities, depending on the society you live in. In America, the minority or the downtrodden or the deprived one would be the black people. In India, it could be Dalit, depending on the region that we live in. Okay. Black, white is prominent in America. So, and the poet who wrote it, Maya Angelou herself was black. I mean, Afro-American, black Afro-American. So she has faced a lot of trouble when she was young. She was raped, she was molested, she was a bus conductor. She had lots of struggle on her way, and she was molested so many times sexually that she was in a rehab for a very long time. So she herself is a cage bird, or she was a cage bird. So most of the poetry that we know about Maya Angelou was written during the time when she was in that rehab coming out of the mental trauma that she faced because of the rape. So this is one of the poems in which she is symbolically talking about cage bird. So who is cage bird? Cage bird is people who belong to third gender, people who are not from the dominant sexual preferences. Cage bird can be people who do not follow the dominant religion, the mainstream religion. Uh, it can be Dalit, it can be tribal people, it can be women in most societies, it can be kids because they are also helpless because things are imposed on them. So you have to keep in mind these binaries. So the cage bird represent the downtrodden, the powerless, and the free bird are people like white people in America, like people who follow the dominant sexuality or religion in India. So here, this is a symbol of talking about how one class of society is different from the other class of society, how the haves are different from the have-nots. So this bird is a symbol. So the free bird leaps in the back of the wind. So free bird uh, keeps on moving from one part of the place to the other part on the back of the wind. So the wind is like described as metaphorically as a say an animal. So for example, horse on which we can ride. So the free bird rides where on the back of the wind. जैसे गाय के पीठ पे लोग चलते हैं, जैसे बैल के पीठ पे, बुल के पीठ पे, और जैसे बाइक के पीठ पे लोग चलते हैं. सो फ्री बर्ड घूमती है कहाँ, किसके ऊपर? हवा. द फ्री बर्ड लीप्स, द फ्री बर्ड जंप्स वेयर? ऑन द बैक ऑफ द विंड. सो वो फ्री बर्ड जंप करती है, हवा के साथ चारों तरफ जाती है एंड फ्लोट डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स. सो फ्री बर्ड जो है डाउन स्ट्रीम जाती है जिधर विंड जाता है. So the wind is compared to the flowing of the river. So the wind is compared to the flowing of the river. So if you have a boat and if you flow downstream, means you're flowing along with the flow. So ये free bird जो है जहाँ उसको हवा ले जाती है वो वहाँ जाती है. So symbolically, free bird can choose. So the most important thing that a free bird has the power and dignity of making choice. So if you have money, you can choose. So if you are from the dominant gender, you have power to choose. If you are not from the minorities, if you are from the majority, you have lots of options. If you are a Dalit, you have almost no option to rise up in life. So free होने का फायदा ये है कि आप
हवा के साथ कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप अमीर हुए, अगर आप व्हाइट हुए अमेरिका में, अगर आप लॉ मेकर हुए, अगर आप, so free bird is symbol of all those rich people, symbol of all those lawmakers, powerful people, bureaucrats. In the case of India, it can be the mainstream religion, it can be the mainstream media, it can be the mainstream filmmakers. So once you are in the power-centric group, you are like the free bird. अब हवा के साथ, हवा आपके साथ जाती है क्योंकि आप पावरफुल पीपल है, और आप जैसे बोट नदी के सहारे चलते रहता है, वैसे ये फ्री बर्ड भी, द फ्री बर्ड is compared to all those people who have power. So this powerful people or masculine gender in gender binaries. So ये मर्दों की दुनिया है फ्री बर्ड, जहाँ विंड के साथ वो कहीं भी जा सकते, मर्द कहीं भी जा सकते, पब में जा सकते, डिस्को में जा सकते, बियर पी सकते हैं, घूम सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। औरतों के लिए प्रॉब्लम most सोसाइटीज में। So free bird is a symbol of male, powerful people, rich people. So they float downstream. मतलब जैसे एक बोट डाउनस्ट्रीम जाते रहता है, ये फ्री बर्ड भी वैसे हवा के डाउनस्ट्रीम में। So the wind is again compared to the flow of the current of water. The wind is again compared to the flow of the water. The wind is again compared to the flow of water. So वो बोट के तरह आकाश गंगा में फ्री बर्ड कहीं भी घूम सकती है। It dips its wing in the orange sunlight. वो जहां मन अपना विंग्स को आकाश गंगा में, आकाश is compared to a river in, okay, the sky is compared to a river. So the free bird can dip its wing. तो जहां चाहे जैसे चाहे जी सकते हैं, मर्द जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, मर्द अपना शर्ट ऐसे खोल के भी घूम सकते हैं। If women wear, then there's a taboo. Okay, men can wear any dress, and there is no code length for the dress of the men at most places, but there is a particular cultural and religious dress code for feminine gender. They have to adhere to certain length of the dresses. But free bird, male, powerful people, वो आकाश गंगा में ऑरेंज विंग्स डुबा के कहीं भी घूम सकते हैं, बोलते पूरा आसमान मेरा है। So the free bird is a symbol of rich people, male, masculine people. It's a symbol of powerful people. It's a symbol from dominant gender and sexuality. It's a symbol of people who follow the dominant religion. So वो पीबी उनका है, okay, इंस्टा उनका है। I mean, इंस्टा में कोई भी कुछ कर सकता है, but then they have so many power to control it that almost it seems that power speaks, not creativity or not emotions. So free bird जो है वो कहीं भी जा सकती है, आकाश गंगा में घूम सकती है, अपने परों को आकाश के दरिया में चुबा सकती है, नहा सकती है, और कहती है पूरा आसमान हमारा है। So this is the condition of male, this is the condition of powerful people, this is the condition of mainstream religion, mainstream media. So what happens to the other one? What happens to the feminine gender? What happens to Dalit? What happens to minorities? What happens to people who are from the third gender or a lesbian or transgender? So cage bird is a symbol of all these people. But a cage bird stacks down his own narrow cage. So स्टॉक इज अ वर्ड नॉर्मली जहाँ कोई किसी का पीछा करता है तो यूज होता है, बट यहाँ केज बर्ड जो है अपने ही केज में घूम रही है, वो करे ही क्या? So you must have seen animals in the cage, they keep moving from one place to another. It's not because they're entertaining us, it is because it's a disease. When you are in the cage for a long time, you start walking in the cage. It's a psychological disease. So cage bird जो है the symbol of feminine gender, तो घर में रहने वाली वो एक ही जगह घूम रही है। Can seldom see through the bars of, मतलब वहाँ सलाखें हैं, मतलब आयरन बार्स है, और आयरन बार से केज तो छोटू सा है, तो आयरन बार से कितना कुछ ही दिखेगा। So this free cage bird can hardly see anything through the bar. Similarly, people from deviant groups, people who are not, majority, people who are not rich, people who are not white, so they have a very limited vision of life.
सो दे आर रेज, तो गुस्सा आता है उनको, वो चाहते हैं अपने इस केज को तोड़ दे, लेकिन केज को तोड़ने के लिए तो पावर चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया इतने बड़े लोहे के सलाख को कैसे तोड़ पाएगी? एक छोटी सी औरत ये मैस्कुलाइन जेंडर का स्टीरियोटाइपिंग को, स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ पाएगी? एक दलित ने साल अरसों का डोमिनेशन ओवर पुअर पीपल कैसे तोड़ पाएगी? उसका विंग्स को काट दिया गया है। सो चिड़िया के विंग्स को काट दिया गया है और उसके पैर को बांध दिया गया है। इट मीन्स दैट दे हैव नो पावर टू डू एनीथिंग। सो उनके पर को कर दिया गया है। वुमेन्स, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वुमेन्स आर नॉट allowed to vote most of the time in history. They did not have the right to property. They did not have right to pension. They did not even have at many places abortion rights. They did not even allow to go to many religious places because of menstruation problems. I mean, they call it problem. I mean, say the people who don't allow women to come into the religious places, they say कि शुद्ध हो जाएंगी धार्मिक स्थल. So this is clipping the wings. And the feet are tied, मतलब उनके पैरों को बांध दिया गया है कि वो हर जगह ना जा पाए, हर जगह अपने कदमों को ना फैला पाए. जब पैर बंधे हैं और पर को काट दिया गया है तो एक हेल्पलेसनेस है. So out of this helplessness, this bird is opening the throat to sing. Free bird also sings. The cage bird also sings, but the free bird sings out of happiness, joy, excitement, hope. Cage bird is singing out of anger, frustration, disappointment, helplessness, misery, दुख. So the cage bird जो है वो केज में, जहाँ केज से थोड़ा सा दिख रहा है और उसके पर को कतर दिया गया, पैरों को बांध दिया गया. अब आपके पैरों को बांध दिया जाए और हाथ को बांध दिया जाए, then you'll shout. So this shouting will not be out of joy, out of feeling excitement. So this shouting it out is out of pain. The cage bird sings. ये चिड़िया जो है गाती है, चिल्लाती है, sings मैंने चिल्लाती है. But there's a fearful thrill. और वो जब चिल्लाती है ना, उसके चिल्लाने में एक डर भी है, उस डर के साथ एक थ्रिल भी है. नाउ इसका दो मतलब है. एक, thrill because when you're afraid, there's a thrilling experience. For example, when you watch a movie, a horror movie, okay, so you're fearful but you're thrilled. Okay. So दूसरा मीनिंग ये है कि जो लोग केज बर्ड को देखते हैं वो तो चिल्लाती है, लेकिन उनके लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है. And those who are watching the cage bird shouting, for them it's a thrilling experience. उनको तो अच्छा ही लगता है. There's another thing. और things unknown, मतलब उनके साथ क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, उनको केज बर्ड के साथ एक अजब सा थ्रिल सा काम करता है. मतलब एक टेंशन सा रहता है. ये फियरफुल थ्रिल, हैप्पी थ्रिल नहीं है. ऑफ थिंग्स अननोन, मतलब उनको डर लगता है इस बात का भी कि अगर बाई चांस ये केज खुल गया एंड इफ दे गो टू अननोन प्लेसेस, वहां तो और ज्यादा डेंजर हो सकता है. So this thrill is of unknown thing because the cage bird have a very safe place, apparently safe. Apparently safe. The cage bird is given food. The cage bird does not have to fight for its own shelter, own food, own rights. But cage bird is safe. तो cage bird को डर है कि कहीं अगर बाहर निकले तो unknown चीज का डर लगता है. But long for still, but still they long for unknown thing. Cage bird का ultimate desire है कि हम बाहर निकले. हाँ, बाहर your life is not guaranteed. You may be killed by hunter, but there's a dignity in that. There's a respect in that. So the cage bird is crying, and the crying of the cage bird is heard in distant land because there's a emotional either resonance, एक link है between cage bird यहाँ गा रही है तो दूर दूर तक लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि फिर कहीं और कोई केज बर्ड है कुछ उसका हालत भी वैसा हो. So cage bird is shouting out of pain, and there's a thrilling experience. There's a pain in it, and because she wants to feel the unknown, because she has never seen unknown. So the cage bird, or she at least imagines that one day she will see. So the cage bird, the music, singing is heard of distance land. And वो यहाँ गाती है तो दूर दूर तक उसका गुनगुनाहट सुनाई देता. Of course, इन कानों से नहीं, मन के कानों से. Not through these ears, but with the ear from the heart. So the cage bird is singing, and its singing is heard in distant land because it's singing out for freedom. So when India was fighting for freedom, this same song was heard in South Africa. The same sound
was heard in America in Civil War. So हर जगह ही केज बर्ड है और हर जगह ही वो गाती हैं, and the singing can be heard all over the places where there is captivity. Free bird क्या करती है? So the free bird thinks of another breeze. So the free bird goes to one wind, then it goes to another wind. The rich people can go to one hotel, another hotel. The white people, the dominant religion people, the dominant gender, the, the masculine gender in the opposite of feminine gender, they go from one place to another. And the trade winds moves to the tree. वो हवा से जाते हैं और हवा का जो झोंका है ट्री से जाता है और कितना सुनहरा एक म्यूजिक क्रिएट करता है. The free bird is there to enjoy even the movement of the free bird is able to enjoy the movement of the wind to the trees, and it can eat fat worms in the morning, in the dawn. जब सुबह होता है उसे एक से एक खाना मिलता है. हाँ, फ्री बर्ड को एक से एक खाना मिलता है, but there's a risk of being hunted, but still there's a dignity. Of course, there's no guarantee of life, but whatever life is left, it is lived to the fullest. But cage bird, को खाना तो मिलता है, but the cage bird cannot claim the sky as his own. The cage bird cannot even claim the cage as its own. The cage bird has no ownership. The cage bird has no identity. The cage bird has no dignity. The cage bird has no self-respect. The cage bird has no self-esteem. The cage bird has no fulfillment. So the cage bird cannot claim, cannot say कि आसमान हमारा है. Cage bird का तो cage भी अपना नहीं है, आसमान कहाँ से अपना होगा? So the cage bird sings with painful, thrilling voice. Cage bird wants to go to unknown places. When the cage bird sings, उनके गुनगुनाहट तो दूर दूर सुना जा सकता है. Free bird एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक जाती है, हवा को फील करती है. हवा जो ट्री से पार होता है तो एक गुनगुनाहट सा आवाज होता है. फ्री बर्ड जो है सुबह सुबह ब्राइट लॉन में, गार्डन में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रूट्स खाती है. ब्राइट वार्म उनके लिए तो फूड है. लेकिन केज बर्ड केज में खड़ी होती है और वो केज ही उसके सपनों का ग्रेव है. उसके सारे सपने उसको मरता दिखते हैं. She can see all the dreams dying. So the cage is a grave on which all her dreams are dead. So she is standing on the grave of her own dream. उसके अपने सपनों को वो मरता देखती है. अब वो कभी अपने तरीके से जी नहीं पाएगी, अपने तरीके से मर नहीं पाएगी, अपने तरीके से हंस नहीं पाएगी. So the cage bird is a symbol of feminine gender. The cage bird is a symbol of black people. It's a symbol of the sexually deviant. The cage bird is a symbol of black people in Africa or in America. The cage bird is a symbol of minorities. So the cage bird के सपने को वो मरता देखती है. और जब अपने सपनों को मरता देखती है तो it's compared to spoiled as the grave of a dream. His shadow shouts on a nightmare screen. और चारों तरफ उसका शैडो होता है. तो शैडो जो है ना एक नाइटमेयर की तरह होता है. The cage bird is standing in the cage and the shadow of that bird is like a nightmare. मतलब वो केज में रहना एक बुरा सपना को जीने के बराबर है. केज बर्ड अपने ही शैडो से डर जाती है क्योंकि हर शैडो उसको यही याद दिलाता है कि now your life is finished. Now you cannot dream. Now you cannot fly. Now you cannot raise your wings. Now you cannot see the sunrise. Now you cannot see the sunset. Now you cannot see the rainbow. Now you cannot enjoy the rain. So the cage bird जो है अपने सपनों को देखती है और अपने ही शैडो में अपने सपनों को मरता देखती है. तो विंग्स आर क्लिप्ड. केज बर्ड को विंग्स जो है कतर दिया गया, उसको पैरों को बांध दिया गया. मतलब दलित लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए, फेमिनाइन जेंडर लोग के लिए, ट्रांसजेंडर लोग के लिए सब कुछ सीमित है. उनके सपने साकार नहीं होते और रास्ते में भीख मांगते दिखते हैं. दलितों के बच्चे बेचारे मोस्ट करते हैं, पढ़ नहीं पाते. सो उनके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है और जब वो रोते हैं तो बाहर वालों को क्या पता चिड़िया को देख के कि क्या कोई अंदाजा लगा पाएगा कि किस लिए रो रही है. तो फिर वो रोती है, लेकिन ये रोना हैप्पी नहीं है, ये रोना पेन से. द केज बर्ड इज क्राइंग. द केज बर्ड अपने ही सपनों के ग्रेव पे खड़ी है. केज बर्ड के शैडो नाइटमेयर जैसा चिल्ला रहा है, बुरा सपना जैसा कि कोई देखता है माय मदर इज डेड, माय फादर इज डेड, आई फेल्ड इन एग्जाम. सो केज बर्ड का शैडो जो है, उसका जो जेल है वो एक ऐसा लग रहा है कि उसके सपनों का जनाजा निकला. ऐसा लग रहा है कि सब सपने टूट गए और शैडो चारों तरफ उसको ये दुख का याद दिला. द केज बर्ड सिंग्स विद अ fearful thrill. केज बर्ड गाती है, उसके गाने में एक अजीब सा पेन है, थ्रिलिंग वाला पेन.
वो अननोन जगह जाना चाहती है, नए नए चीजों को सीखना चाहती है. सी लॉन्ग मैंने डिजायर्स फॉर ट्यून टू दी हार्ट, मतलब वो यहाँ गाती है लेकिन उसका गाना दूर दूर तक फैल जाता है. क्यों? बिकॉज एवरीबडी, देयर इज ए एवरीवेयर देयर इज अ क्राई फॉर फ्रीडम. सो द केज बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, द केज बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, द केज बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम. केज बर्ड गाती है आजाद, आजादी पाने के लिए. फ्री बर्ड गाती है आजादी से. One sings for freedom, another sings out of freedom. One sings to get something. One has already got it, so she's singing. The rich people sing because they have already achieved, so they're singing out of achievement. Poor people are singing because they have failed to achieve because of the social structure. The Dalits are crying because they have failed, and the Jamindars are crying because they have achieved. The transgenders are begging on the street because they have nothing. The rich people are crying because they are achievers. So one is crying as a victim, free bird, and the cage bird is crying as a victim. So this cage bird and the free bird is a contrast between power and powerless people, and have and have nots, rich and poor, black and white, male and female, and so many other binaries. So this is a symbolic representation of so many things, but at a surface level, it is a poem between powerful people and powerless people. So I presume that you have found some meaning in this video, benefit. So please do comment, like, and subscribe the channel. Thank you for watching the video. If you have found any meaning, I do request you to please share it with your friends and anybody who might get benefit out. Thank you for watching the video.